Hello students. Welcome to Asan Public School. And I am your teacher Muhammad Asan Khan. So today we gonna talk about English of class 9th. Chapter number 2. Shah Abdul Latif Bhittai. So let's begin. Shah Abdul Latif Bhittai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindh Sufi scholar, mystic, saint and poet. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. Information about the life of Bhittai has mostly been collected from oral traditions. A renowned Pakistani scholar, educationist, and writer of plays, dramas and stories. Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhittai from some of the old people living at that time. These people had heard this fact from their father and grandfather, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. As a Sufi poet, Latif, Urz is healed at his time every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. Thousands of people gather and listen to the silent song sung on the tamburo. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई, जिन्हें उनके अकीदतमंद प्यार से लाल लतीफ कहते हैं, सिंध के मारूफ सूफी स्कॉलर, सूफी, बुजुर्ग और शायर थे। उन्हें सिंधी जुबान का सबसे बड़ा मुस्लिम शायर माना जाता है। भुट्टाई की जिंदगी के बारे में मालूमात ज़्यादातर जुबानी रिवायात से जमा की गई हैं। एक मशहूर पाकिस्तान स्कॉलर, माहिर तालीम और ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ मिर्ज़ा खलीज बैग के बारे में कहा जाता है कि उसने शाह भुट्टाई की इब्तिदाई ज़िंदगी की तफसीलात उस वक्त के रहने वाले कुछ पुराने लोगों से इकट्ठी की। उन लोगों ने ये हकीकत अपने वालिद और दादा से सुनी थी, जिनमें से बाज़ ने शाह लतीफ़ को बज़ात खुद देखा था और उनसे बात भी की थी। बहसीत सूफ़ी शायर, लतीफ़ फरस हर साल मुस्लिम कैलेंडर के दूसरे महीने 14 तारीख को अपने वक्त पर ठीक होता है। हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाए जाने वाले खामोश गाने सुनते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे मकाले पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में बताते हैं। लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स के इश्तराक करदा चंद अहम पहलू झेल में दिए गए हैं। Background and family. Shah Latif ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Syed Habib Shah, migrated from Matyaru, his incentive home in Afghanistan, to Bainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. Others say that his insertion migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif ancestors liked it so much that they decided to make it their home. शाह लतीफ़ के आबाओ अजदाद की जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि शाह के वालिद सईद हबीब शाह ने एक मकामी मुत्ती शख्स बिलावल से रूहानी राबता हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपने तरगीबी घर मुटियारू से सिंध में भीनपोर हजरत की थी। दूसरे कहते हैं कि उसका अंदराज हैरात से सिंध मुंतक़िल हुआ। सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था और शाह लतीफ़ के आबाओ अजदाद ने इसे इतना पसंद किया कि उन्होंने इसे अपना घर बनाने का फ़ैसला किया। The name Bhittai. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on the mound at some distance from his village. A mound of sand is called Bit in Sindh. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bit. To this day he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhittai or Shah Latif of the Mound. 1742 में शाह लतीफ़ अपना घर छोड़कर अपने गांव से कुछ फासले पर टेले पर रहने चले गए। रियत के एक टेले को सिंध में भुट्ट कहते हैं। सारी जिंदगी इसी टेले पर रहने की वजह से शाह लतीफ़ को भीट का वली कहा जाने लगा। आज तक वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई या टेले के शाह लतीफ़ के नाम से मशहूर हैं। Early life and education. Shah Bhittai was born in 1680 AD, 14th Safar 1102 AH, in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bit Shah. Latif was raised during the golden age of Sindh culture. His first teacher was Akhund Nur Muhammad Bhittai, but mainly he was self-educated. Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knows Arabic and Persian quite well. Various differences in Shah Jo Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadiths. His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. शाह भुट्टाई अव्वल 1600 ईस्वी 14 सफर 1102 हजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए, जो कि मौजूदा कस्बा भुट्ट शाह के मशरक में चंद खाने के फासले पर है। सिंध की सकाफत के सनहरी दूर में लतीफ़ की परवरिश हुई। उनके पहले उस्ताद आखविंद नूर मोहम्मद भुट्टाई थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो खुद तालीम याफ्ता थे।
अगरचा उसने बहुत कम रस्मी तालीम हासिल की, लेकिन रिसालो उस बात का सबूत फ्राहम करता है कि वो अरबी और फारसी अच्छी तरह जानते हैं। शाह जो रिसालों में मुख्तलिफ अख्तलाफान बताते हैं कि वो कुरान पाक और अहादीस का गहरा इल्म रखते थे। उनके शोरी मजमुओं में मौलाना जलाल अल-दीन रूमी की मुस्नवी और शाह करीम की नज़में शामिल थीं। Youth. Young Latif had a very sensitive mind. While he was only a boy, he started composing poetry. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1713, the Sufi married Bibi Saida Begum. His wife died at an early age, before she could have any children. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. I found it difficult to live a normal domestic life. नौजवान लतीफ़ बहुत हसास ज़हन के मालिक थे। जब वो सिर्फ लड़का था, उसने शायरी शुरू की। फितरत की खूबसूरती के लिए उनकी तारीफ ने उनके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया। सफ़र 1713 में सूफ़ी ने बीबी सैयदा बेगम से शादी की। उसकी बीवी का इंतकाल कम उम्री में हो गया था, उससे पहले कि उसके कोई बच्चे पैदा हों। ताहम शाह ने दोबारा शादी नहीं की। उसका दिल मजहब और अक़ीदत की तरफ बढ़ता गया और वो बेचैन हो गया। मुझे आम घरेलू जिंदगी गुजारना मुश्किल महसूस हुआ। Spiritual growth. Latif's love of God grows more and more, to the extent that he found pleasure only in devotion. As a result, he spends most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that the people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle way, and his followers increased day by day. Close to the mount on which Lal Latif came to live in a natural lake. His poetic nature loves the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. लतीफ़ खुदा से मोहब्बत उस हद तक बढ़ता है कि इसे सिर्फ अक़ीदत में ही लज़्ज़त मिलती है। नतीजतन, वो अपना ज़्यादातर वक्त दौम और गहरी सोच में गुजारता है। दौम और अक़ीदत से उसकी रूहानी क़व्वत इतनी मज़बूत हुई कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। जो भी उनके पास आता वो उनके नरम राय से बहुत मुतासिर होता और उसके पैरोकार रोज़ बरोज़ बढ़ते गए। उस पहाड़ के करीब जिस पर लाल लतीफ़ एक कुदरती झील में रहने के लिए आए थे, उनकी शायराना फितरत पुरसकून माहौल को पसंद करती है। वो अपना ज़्यादा वक्त इसी झील के किनारे बैठकर गुजारता। जब वो वहाँ बैठा तो उसने खुदा से दुआ की और कभी कभी उसकी तारीफ में आयात लिखीं। Death and remembrance. Lal Latif died in 1752, on the mound where he had lived. He was buried on the same mound. It is said that one day he ordered the musician to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that built a grand mausoleum over his grave. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. His devotees collected his poetry, and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. Every year the devotees celebrate his Urs, which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle and kind soul. He was a Sufi in the true sense of the word. The word, Latif, literally means fine, delicate, tender, elegant and light. The meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. In his poems he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. However, he also mentions distant cities, such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samandi, their navigation techniques, and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. Here is the translation of one such verse: clouds return and once again, it rains. Lightning flashes from all sides, and with it, some go to Istanbul, others turn to the west. Some shine bright over China and others take care of Samarkand. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar, some lie on Delhi, Deccan, thundering over, my beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance, my beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. Shah Abdul Latif Bitai, Sir Sarang Jo Risalo. His collected poems have been compiled in Shah Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu, and other languages. His spiritual and mystic poetry carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. Shah Abdul Latif Bitai is, and always will be, remembered for his great poetry with love and reverence. लाल लतीफ़ का इंतकाल मई 1752 उस टेले पर हुआ जहां वो रहते थे। इसे इसी टेले पर दफन किया गया। कहा जाता है कि एक दिन उसने मौसीकार को मौसीकी बजाने का हुक्म दिया।
वो 3 दिन तक मुसलसल खेलते रहे। जब उन्होंने खेलना छोड़ दिया तो उन्होंने शायर को मर्दा पाया। सिंध के एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलाउड़ो उनसे उस कदर अकीदतमंद थे कि उनकी कब्र पर एक अजीम अलशान मकबरा बनवाया। मज़ार का खूबसूरत सफ़ेद गिनबद लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। उनके अकीदतमंदों ने उनकी शायरी जमा की और उस मजमुआ को शाह अब्दुल लतीफ़ का रसाला कहा जाता है। हर साल अकीदतमंद उसका अरस मनाते हैं, जो 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। शाह अब्दुल लतीफ़ एक हसास नरम मजाज और शफ़ीक़ रूह थे। वो हकीकी मानों में सूफ़ी थे। लफ्ज़ लतीफ़ के मानी ठीक, नाज़िक, नरम, खूबसूरत और नूरानी हैं। मानी सही मानों में उनकी शायरी और शख्सियत दोनों में झलकते हैं। मज़ीद ये कि वो अवाम के शायर थे, इसलिए आम आदमी की ज़ुबान में लिखते थे। अपनी नज़मों में वो बुनियादी तौर पर सिंध और उसके पड़ोसी इलाक़ों के बारे में लिखते हैं। ताहम वो इस्तांबुल और समरकंद जैसे दूर दराज के शहरों का भी जिक्र करता है, और सिंधी मलाहों, समंदी, उनकी नेविगेशन तकनीक, और मालाबार कोस्ट, श्रीलंका और जावा के जजीरे तक उनके सफ़र के बारे में भी बात करता है। ऐसी ही एक आयत का तर्जुमा ये है: बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है। हर तरफ से बिजली चमकती है, और उसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं, कुछ मगरिब की तरफ जाते हैं, कुछ चीन पर चमकते हैं और कुछ समरकंद की देखभाल करते हैं। कोई रोम, काबिल और किंधार की तरफ, कोई देहली, दिकन पर गरजता है। मेरे प्यारे अल्लाह तो सिंध को सदा आबाद रखे, मेरे प्यारे अल्लाह तो सारी कायनात को सनवार दे। लतीफ़ भुट्टाई, सर सारिंग जो रिसालो। उनकी जमा करदा नज़्में शाह जो रिसालों में मरतब की गई हैं, जिनका अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। उनकी रूहानी और सूफियाना शायरी में मोहब्बत का पैगाम है, जो इसे आलमगीर और पूरी नस्ल इंसानी के लिए काबिल कबूल बनाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई अपनी अजीम शायरी के लिए मोहब्बत और अकीदत के साथ याद किए जाते हैं, और हमेशा रहेंगे।